Hello everyone, welcome to our new channel Growth with Us. So today we start this chapter that is Elementary Theory of Demand. I hope you like this subject. That's why you choose it, right? Okay. What do you mean by demand? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे कि हम अपनी मम्मी पापा से ज़िद करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो हम वो क्या करते हैं, वो डिमांड क्रिएट करते हैं उस चीज़ का. So we say na, I want this, that. So here also the demand meaning these two keywords, the want and desire, is going to help a lot. चलिए समझते हैं डिमांड्स का मीनिंग. द टर्म डिज़ायर, wants and the demand have the same meaning. अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो डिज़ायर्स और वॉन्ट्स दोनों का मतलब सेम ही निकल के आएगा. डिज़ायर्स मीन्स मुझे वो चीज़ चाहिए एंड वॉन्ट मीन्स भी मुझे वो चीज़ चाहिए. बट अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करें, दीज टर्म्स हैव अ डिफरेंट मीनिंग. डिज़ायर्स मीन्स मेयर टू विश, अभी हम बस सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में. बट वेन वी आर रेडी टू स्पेंड, वॉन्ट, नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए, देन इट्स इफेक्ट्स द डिज़ायर्स. डिज़ायर्स इज चेंज इन टू योर वॉन्ट्स. ओके, दैट इज़ हेयर इट इज़ गिवन एट. अगर हम डिमांड का मीनिंग लिखते हैं तो हमें ये 3 कीवर्ड्स ज़रूर ऐड करने. कैसे ऐड करेंगे? डिज़ायर फॉर अ कॉमोडिटी. हेयर कॉमोडिटी मीन्स एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, डोंट बी कन्फ्यूज्ड. मीन्स टू बाय. मीन्स टू बाय मीन्स हमें वो चीज़ चाहिए. आई एम रेडी टू बाय. readiness to spend, I am going to purchase that a particular product and I am ready to spend it. Okay, so अगर इन सिंपल टर्म्स में देखें तो डिमांड्स का मीनिंग क्या होता है? डिमांड फॉर एनी कॉमोडिटी which consumers are willing, here it is coming, no, willing means desires. Okay, willing and able to purchase at a different price. सो द डिमांड का मीनिंग तो आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख लेना. अगर आप और अच्छे और सिंपल लैंग्वेज में चाहते हो देन कमेंट इन द सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गिव यू. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ the type of demand. Yeah, here also the different types of demands comes. First is joint demand, which is very common. When 2 or more goods are demanded together, it is called joint demand. 2 or more goods means like एक गुड्स के साथ दूसरे गुड्स का भी डिमांड क्या बढ़ रहा है, टुगेदर. इट इज़ कॉल्ड बी जॉइंट डिमांड. इट एग्जिस्ट व्हेन 2 or more goods are required together. When it is exist when 2 or more goods are together demanded by a particular want. Joint demand is also called the complementary demand. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मे बी इट्स कम्स इन योर MCQs पार्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो ऐसा, अगर हम लोग सोचते पहले कि वो ऐसा कौन से 2 चीज़ें जिसका डिमांड एक साथ बढ़ता है. फर्स्ट क्या हो सकता है? दैट इज़ डिमांड फॉर प्रिंटर. इफ़ वी आर गोइंग टू बाय द प्रिंटर देन वी डेफिनेटली नीड्स द इंक, राइट? सो द डिमांड फॉर प्रिंटर्स एंड द इंक आर डिमांडेड together. Printer needs ink to functions, right? More example also, like car and petrol, and the most important here it is also given that the SIM card, mobile and SIM card. Okay, every time we use this, but हमें ये पता नहीं होता कि ये कोई जॉइंट डिमांड है, राइट? द सेकेंड डिमांड इज़ कंपोजिट डिमांड.
Composite demand means the demand for a commodity which can be put to a several uses is known as composite demand. And the key words is which can be put to a several uses. Means a particular commodity can be used in different ways. For example, here it is given that the coal can be used for heating, cooking and operating railways, engine, etc. and more. Here the one another example is which I पर्सनली लाइक, दैट इज़ मिल्क. मिल्क तो हम लोग अपने घर में रोज़ ही यूज़ करते हैं, हम लोग देखते भी है. तो मिल्क कैन बी यूज्ड एज अ स्वीट, टी, बटर, चीज़ एक्सेट्रा. Land also is a good example. So you learn 2 or 3. Okay. Then direct demand. The direct demand, as the name suggests, the demand for such commodities which can be directly demanded. अब आप लोग सोच रहे होगे तो ये सब डिमांड का डायरेक्टली डिमांड नहीं था. So here is the difference. See, the demand by the consumer for the satisfactions of the want. अभी हम बताए थे want means उस चीज़ को चाहना, इज़ नोन एज द डायरेक्ट डिमांड. मीन्स हमें वो चीज़ चाहिए, ज़रूरत है. डिज़ायर मीन्स ओनली इच्छा है मुझे उस चीज़ की. बट वांट मीन्स व्हेन वी आर रेडी टू spend on the particular product. Okay, the demand for such commodities which are directly demanded by the consumer for the satisfactions means वो हमारे डेली यूज़ के लिए भी हो सकता है या फिर डायरेक्टली वो हमारे wants को satisfy भी करे. So when we see the example, the direct demand is also known as autonomous. Okay, this other name word is also very very important. एग्जाम्पल है, देखो सच डिमांड्स आर फूड, क्लोथ्स, हाउस एक्सेट्रा. अब आप ही सोचो क्लोथ्स और फूड्स के लिए क्या वो हमारे डायरेक्टली वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं. इट्स अ डेली नीड. ओके, फूड, क्लोथ्स. अब सेकेंड, द डिराइव्ड डिमांड. इट इज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूज टू यू ऑल बट इट इज़ नॉट एज हार्ड एज यू थिंक. इफ अ थिंग इज़ नीडेड, here the thing is needed means what? See, if a thing is needed for producing some other goods which we actually need, it is called derived demand. This 2 line if you mug up, then you are ready to go for your boots. I am telling you, if a thing is needed, अगर आप देखोगे ध्यान से, इफ़ अ थिंग इज़ नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स मीन्स लाइक यहाँ पे एक कोई चीज़ मान लो एक ब्रिक्स है. ब्रिक्स मीन्स यू नो ना, ब्रिक्स. देन सीमेंट का फैक्ट्री है एंड हेयर द कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग का. हेयर एक इधर. तो अगर हमें मान लो मुझे एक बिल्डिंग चाहिए और मुझे इसका कंस्ट्रक्शन करवाना है. तो अगर मुझे ये बिल्डिंग का अगर मेरे से ये डिमांड बढ़ता है बिल्डिंग का, तो ऑटोमेटिकली किसका डिमांड बढ़ रहा है यहाँ पे? ब्रिक्स एंड सीमेंट का. राइट, ब्रिक्स एंड सीमेंट का क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैंने क्या डिमांड किया है? एक बिल्डिंग का डिमांड किया है. एंड अगर आप इस डेफिनेशन को रिलेट करके देखो, इफ़ अ थिंग इज़ नीडेड, थिंग इज़ यहाँ पे थिंग क्या नीड है मेरे को? बिल्डिंग का नीड है. इफ़ अ थिंग इज़ नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग, इफ़ अ थिंग इज़ नीडेड मीन्स हेयर ये मुझे बिल्डिंग के लिए किसकी नीड है? ब्रिक्स एंड सीमेंट की. इफ़ अ थिंग इज़ नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स क्या है यहाँ पे? बिल्डिंग. विच वी एक्चुअली नीड. क्या हम ब्रिक्स और सीमेंट का नीड है? मुझे किस चीज़ का नीड है? बिल्डिंग का नीड है. तभी तो इन दोनों का डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. विच वी एक्चुअली नीड, इट इज़ कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर वर्कर्स, या इट इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ साइकिल फैक्ट्री. अगर मुझे साइकिल को बनाना है तो ऑटोमेटिकली मुझे किसका डिमांड बढ़ जाएगा? वर्कर्स का. जैसे यहाँ पे था, अगर आप इन दोनों का एग्जांपल लोगे
तो बहुत ही अच्छा रहेगा बिल्डिंग. ओके. इफ अ थिंग इज नीडेड, थिंग क्या है यहाँ पे, एक ये दो चीज़. इफ अ थिंग इज नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स विच वी एक्चुअली नीड, इट इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड. द नेक्स्ट इज composite demand, when two commodities are closely substitute. अब substitute का मतलब समझो. मान लो यहाँ पे कोई एक टी है, कॉफ़ी. ओके. टी एंड कॉफ़ी, ये दोनों क्या है, सब्सिट्यूट है. मान लो टी का चाय पत्ती का दाम बहुत ज़्यादा है, तो हम कॉफ़ी से आज काम चला लें. मीन्स a product which can be replaced by some other product is known as the substitute. Okay. When two or commodities are closely substitute of each other, an increase in the quantity demanded of one of them will reduce the demand for other. Here the meaning is very simple, but it is little bit confused to you all. See, when two commodities, let's take this tea and coffee. Two commodities are closely substitute. Yeah, it's closely substitutes of each other. Yeah, we agree this. We have agreed with this. An increase in the quantity demanded. An increase in the quantity demanded. यहाँ पे increase किसका हो रहा है? Demand किसका increase हो रहा है? कॉफ़ी का. An increase in the quantity demanded of one of them, इन दोनों में से किसी एक का डिमांड बढ़ रहा है, will reduce the demand for others. Yes, when we leave this tea and we prefer the coffee, then it's definitely reduce the demand for the tea. Okay. All such commodities are in competitive demand. All such commodities are in the competitive as the name suggests, the competitive, like इन दोनों, ये दोनों आपस में compete कर रहे हो, like the demand with one another. So here all the types, and if you want the next individual and market demand, then definitely see in the next part. Okay, thank you.